Good morning, everybody. So Monday will be your day 10 and Friday will be your day 14. Day 10, the author says, no duty is more urgent than that of returning thanks. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. Gratitude is a powerful energy. So before we move on, I want you to take a moment, open up the chat box, and in the chat box, please take a moment and describe in one word, how do you perceive the shape of energy? How do you imagine? What is the shape of energy in your mind? So do you think it's like the shape of thunder or what? So please type in the chat box, how do you imagine? What does energy look like? 8, 5. Sun, air, no shape. Life, spark. Some may say string of golden thread. Some may say bring a bright river of white light. Everybody has a different way of imagining how energy looks like. So same concept, the author here, she imagines gratitude's energy to look like magic dust or like sparkles. And this is exactly what today's day 10's practice is about. You have to imagine that magic dust, that gratitude looks like magic dust or like sparkles in the air. And when you send out gratitude towards other people, imagine that you're sprinkling them with the dust of gratitude. So even like before eating, you can have a look at your food and when you're feeling gratitude, bring to your mind the image of sprinkling magic dust over it. That's pretty much day 10's practice. And the exact homework is that you have to sprinkle dust on 10 people who perform services for you, such as when you go to the supermarket, you see someone helping out or putting the grocery away, anything, any person that's providing you service, you have to feel gratitude for them and imagine as if there's magic dust sprinkling on those people. Okay. Magic dust. So कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. तो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया है कि अगर हम किसी को दिल से कुछ भी देंगे तो वो 1000 गुना होकर हमारे पास आता है, राइट? सो कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, ताकत है. तो हमें क्या करना है कि बहुत सारे जो व्यक्ति है हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं है और उनको हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं. जैसे आप शॉपिंग सेंटर में जाओ, ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, गार्बेज पिकअप करने के लिए आते हैं, हम मॉल में जब जाते हैं तब जो बेचारा जो अपना गार्बेज उठाते हैं, तो बहुत जगह पे हम लोग उनको ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं और उसकी वजह से हम अपने जीवन में अच्छी चीज आने वाली है उनको हम रोक देते हैं. तो उसके लिए जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मैं ये स्टडी करने के बाद मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैं नॉर्थ गई तो जैसे जो लेडी कैश आउट कर रही है, तो हर व्यक्ति जन्म ही दुख, जैसे हम जन्मते साथ में दुख को लेके आते, तो एवरीबॉडी हैज टू फाइट विद द लाइफ. तो वो भी बेचारी, उसका फैमिली होगा, सुबह से हमारे लिए ये सारा कर रही है काम. तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसका नेम टैग पे नाम देख लेती हूँ. जैसे उसका नाम लिखा एना, तो जैसे कैश आउट खत्म हो गया, हाय एना, यू डिड गुड जॉब, थैंक यू सो मच, इतना मैं बोलूंगी तो इतना खुश हो जाएगी. सिर्फ मैं थैंक यू या थैंक यू भी नहीं बोलूंगी तो उनको तो कुछ नहीं, पर फर्क हमें पड़ता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ अच्छी अच्छी चीज आने वाली उसको हम ही रोक रहे. तो ये है. फिर गार्बेज पिकअप. तो गार्बेज पिकअप, हाँ, आपको याद होगा कि 5-6 साल पहले हमारे जो गार्बेज बिन होते थे उसमें लॉक नहीं होता था. याद है किसी को?
पहले लॉक नहीं होता था, अब जो आया वो उसमें लॉक आते, तो लॉक नहीं होता था। सुबह में इतना सारा मेरा गार्बेज वो राखून बाहर निकल देता था, मैं अपने मुंह पे लगा के मैं सब मतलब गार्बेज को फिर से वापस उसमें रखती थी। तो आप देखोगे कि कितनी मतलब जब हम गार्बेज उठाते कितना मतलब उसमें से स्मेल आती है, हमारा हम मूड कितना खराब हो जाता था सुबह सुबह। तो वो जो गार्बेज पिकअप के लिए आते वो तो बेचारे कितनी अच्छी हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, और उसको हम लोग थैंक्स करना भूल जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस में ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने गार्बेज ट्रक देख लिया, मैं मेरे कैमरे में से मैं देख लेती हूँ कि ओ गार्बेज आ गया, मैं यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ, और फिर मैं जस्ट उसके ऊपर मैजिक डस्ट इमेजिन करती हूँ, मैजिक डस्ट डालती हूँ, और पूरे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हम करेंगे मतलब जो डे 10 को हम प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे 10 पीपल है, और उनके ऊपर हम लिस्ट बनाएंगे, और हर एक के ऊपर हम ऐसे मैजिक डस्ट डाल के उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज day 11 is magic morning. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. So each morning is an opportunity of gratitude. If you're waking up and ruminating negative thoughts, you're doing more harm to your life. There's a saying, in the universe, there are things that are known and there are things that are unknown. And in between, there are doors. So don't ruin your mornings by worrying for the unknown. Instead, use gratitude to open doors. Okay? So as you wake up, give thanks to everything you come in contact with. So as soon as you open your eyes, feel gratitude for being alive, being able to think, being able to see. For your bed sheets, your bed, as you take your first step on the floor, feel grateful for the floor for supporting you. And then when you go for freshening up yourself, the tap, the toothpaste, the doors, the doorknobs, your clothes, everything you can possibly imagine, possibly you're coming into contact with. Give gratitude to every single thing. And we tend not to think about the floors that much, usually in the morning, because we're so busy thinking about the negative loops, all the rumination just that's trapping you in a box. But there's a saying that if we surrender to Earth's intelligence, we could rise up rooted like trees. So surrender to Earth. Give yourself out. And how do you surrender? You surrender through gratitude by becoming humble. And that's pretty much it for the magic morning practice. Easy practices this week. So from the moment you open your eyes until you're finished getting ready, say the magic words, thank you in your mind for everything you touch and use. Easy, simple practice for Tuesday, day 11. Good. Yeah. Okay, so magic morning. कहते हैं ना कि सुबह जो हम लोग सुबह हमारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो सुबह का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखेंगे हमारे कल्चर में भी हम जैसे सुबह उठेंगे तो अपने हाथों को देखेंगे और कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य से इस तरह का मंत्र बोलेंगे, और फिर जब हम पैर जमीन को छुएंगे तो उसको हम थैंक्स करेंगे, जब ब्रेकफास्ट लेंगे तब हम उसका मंत्र बोलेंगे। तो हर कल्चर में कहीं ना कहीं हम ग्रेटिट्यूड तो करना का है ही। तो अभी इसमें क्या करना है कि हम जैसे सुबह उठेंगे तो सबसे पहले हमें अपने जो पिलो है, बेडशीट है, कंफर्टर है, अपने मैट्रेस है, बेडरूम को, हर चीज को हमें थैंक्स करना है। जैसे हमने स्टेप आउट किया तो हमें सबसे पहले अपने वॉशरूम में टैप को करिए, अपने हैंड शॉप को करिए, टॉयलेट को करिए, टॉयलेट टिश्यू पेपर, छोटी छोटी हर चीज को हमें थैंक्स करना है। उसके बाद जब हम जैसे ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट को भी थैंक्स करेंगे,
फिर अपने जो भी अप्लायंस है उसको भी थैंक्स करेंगे। तो हम देखेंगे जैसे स्नान कर लिया, स्नान के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो पूरा दिन अच्छा होएगा। तो साइंटिफिकली वे क्या है, हम सूर्य के सामने जब खड़े रहते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी से क्या होता है, हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस आता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। तो वो सेरोटोनिन हमारे बॉडी में इंक्रीज होने से हमें पूरा दिन हैप्पीनेस फीलिंग आती है। तो सूर्य नमस्कार की भी एक ध्रुवी एक क्लिप रख देगी, तो आप ट्राई करिएगा, जो है मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार है। तो आप देखिए पूरा दिन हमारा कैसे जाता है, जैसे ऐसे। तो और दूसरा कि ये प्रैक्टिस तो आपको करनी है कि जो सुबह उस दिन सुबह से लेके आप जब तक आप तैयार नहीं हो, बाहर आप स्टेप आउट नहीं करो, तब तक आपको हर चीज को थैंक्स ग्रेटिट्यूड फीलिंग में रहना है। ओके, तो ये है मैजिक मॉर्निंग। और नेक्स्ट है वेडनेसडे को है मैजिक पीपल हु मेड डिफरेंस। Okay, so day 12, Wednesday, magical people who made a difference. Who are these magical people? So the author says, at times our own light goes out and it's rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude for those who have lighted the flame within us. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it the most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget that those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until we get well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was a pivotal in magically changing the direction of your life for the better. So this person could be your teacher, your coach, your grandparents, your doctor, your nurse. Many times we come into this dark stage in our mind, or this limiting state of mind, where we get nervous or we can't think beyond of the possibilities. And in this time, like a miracle, like an angel, some person pops up into our lives and gives us the guidance or the support or the help we need to push ourselves out of that limiting state. So we should also thank that person for changing our life and shaping our life. And that's what day 12's practice is about, to give thanks to 3 people who really helped change your life because they made a magical difference in your life. And you have to thank them with reasons. So the practice itself is find a place to sit down quietly and think through your entire life and make a list of 3 people who made a difference in your life, and out loud or in your mind, think about them and think about the story, what happened, and then think about the reasons why you're grateful and how they made a difference in your life. And the author gives great examples of exactly how to do that in the book. You want to do Hindi? Yeah. So, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। तो हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है कि हमें इस तरह से हेल्प कर देते हैं कि हम फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स है, सिबलिंग है, अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, doctor, nurse, anybody they help you and you become a success. तो मेरी लाइफ का अगर मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरी शादी दिल्ली में हुई थी और दिल्ली मेरे लिए टोटली न्यू प्लेस था
और मुझे बहुत था कि मेरे पापा ने जो मुझे योग की शिक्षा दीक्षा दी थी, तो मुझे उसमें सब कुछ सिखाने का बहुत मन था। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में भी था, जहां से मैंने योगा सीखा था। तो वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि आप भी यहाँ पे योगा सिखा सकते हैं एज ए योगा टीचर। तो पर ये मेरे घर से बहुत ही दूर था, और मेरी तन्वी उस टाइम पे बहुत छोटी थी, हम जॉइंट फैमिली थी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी आई, मैं इतनी खुश हो गई, पर एक टाइम पे ऐसे हुआ कि कैसे मैं इतना दूर जाऊंगी। और जब क्लासेस हमारी अर्ली मॉर्निंग होती थी, सुबह 5 बजे 5:30 बजे, तो आई हैव टू लीव माय हाउस अराउंड लाइक 4 o'clock या 3:30। तो फिर मेरे को था कि नहीं नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट मैं मेरी जेठानी से बात करी थी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये है वो है। तो फिर मेरे नीलेश के जो बड़े ब्रदर ने ये हमारी कन्वर्सेशन सुना, और उन्होंने कहा कि गीता, तू करके तो देख, तू जाके तो देख। और सच में फिर मेरी जेठानी, दोनों जेठानी ने मुझे हेल्प की, नीलेश ने, मेरी मदर इन लॉ ने, तन्वी ने भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर दिया, और मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे वैसे इतना अच्छा अच्छा हर चीज स्मूथली होने लग गई, अच्छे से हो गई, कि मैंने बहुत, मतलब वहां बहुत जगह पे दिल्ली में मैंने हर डिफरेंट जगह मैंने योगा सिखाया। तो कहने का मतलब है कि वो, उनका नाम है मुकेश भाई, जो नीरज के बड़े ब्रदर है, उन्होंने इतना ही बोला, एक ही शब्द बोला, गीता तू करके तो देख, मना करने से करके तो देख। एक ही शब्द मेरे लाइफ में इतना चिंगारी की तरह हुआ कि मेरे को एनर्जाइज कर दिया कि अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया, आंख बंद करके, करेज इन द मोमेंट, नहीं मैं करूंगी, और आई डिड इट। ओके। तो एक एक है कि एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू सक्सेस। सक्सेस तो हमें ये अंदर से, हमें है कोई चीज करनी है, अपने आप को करेज कीजिए और करिए, करेंगे। फिर ये, अगर ये सारी हम आज की प्रैक्टिस में है कि ऐसे 3 लोगों को आपको ढूंढना है कि जिसको आपको इस तरह से हेल्प की हो, और उनको हमें धन्यवाद करना है। पर धन्यवाद करने से क्या करना है कि आपको तीनों को नाम लिख लीजिए, फिर एक एक नाम को देखिए, और उनसे आप उनको जोर से बोलिए। अगर साथ में नहीं बैठे तो आप उनको जोर से, जैसे उनको संदेशा दे उस तरह से जोर से लाउडली आपको बोलना है कि आपने मुझे ये हेल्प की थी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरीके से। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका हार्ट ओपन होएगा, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, और हैप्पीनेस से आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मेरे पापा हमेशा हम बोलते थे कि आनंद और प्रेम, आनंद और प्रेम दोनों भाई बहन हैं। जब हम किसी को आनंद देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली प्रेम मिल जाता है। तो कहा जाता है कि प्रेम में इतनी ताकत है कि कोई भी काम हम प्रेम से करवा सकते हैं, असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि एक सीरियल है, श्री राधा कृष्ण सीरियल, आप देखिएगा। उसमें जो प्रेम का जो उन्होंने जो बताया है, इट वाज अमेजिंग कि प्रेम प्रेम से क्या क्या नहीं हो सकता है। और ये कोविड में हमें फाइट करना है, तो एक प्रेम ही हमारा बहुत ही अच्छा शस्त्र है। ओके ओके, सो day 10 to day 12 was really about reflecting your past and analyzing your present. But day 13 and day 14 is about the future. So before we go into the future, I want to say something, tell you a story about past, present, and future. So there is a story of a Zen master who went on a walk with 3 of his students. As they were walking, they came across a shrub with a beautiful flower, a beautiful red flower. The Zen master asked his students, "What do you see?" The first student said, "I see that flower and I see someone who I was in love with a long time ago. I remember giving them that flower." The second student said, "Flower is so beautiful. We should offer it at the temple." The third student said, "Flower is a symbol of enlightenment.
Listening to this, the Zen master started to laugh out loudly. Ha 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 ha. And just as he was laughing, a little girl came by, just, jumping in joy. And with a basket full of flowers in her hand, she came by. She plucked that flower that they were all looking at, put it in her basket, and la la, jumped away, walked away, hopped away, and just ran away. And then the Zen master says, "There goes your enlightenment." So what does this story tell us? What is this whole story about? The story tells about how we see something. The first student saw his painful past in the flower, about the girlfriend, how he gave the flower to that girlfriend. The second student saw his pleasure from offering the flower in temple. So he imagined, if I offered this flower in the temple, I would feel so happy. He saw his pleasure. The first one saw his pain. The third one, student had his desire awakened to be enlightened, just like his master. The third one said, this flower is a symbol of enlightenment. So he saw his desire in that flower. So nobody saw the flower without analyzing or judgment or thinking. Nobody saw the flower for what it really was, a flower. If you can see it with a quiet mind, then you see reality. Then you're not seeing the image of your own making. And the lesson here is, when we see our loved ones, who do we see? Do we see them for who they are, or the projection of who we want them to be? Our past experiences and subconscious programming affect the way we view the world. Our pain, pleasure, and desires, the three students, are our own projections. When we start appreciating our realities, when we start seeing our realities of the present moment, in that moment do we truly find our freedom, our happiness. Zen Master Suzuki Roshi said, when you realize the truth that everything changes and you find your composure within it, then you find yourself in Nirvana. And Nirvana is that deep understanding of who we are. Nirvana is the ultimate happiness we can discover. So where does gratitude fit in this? We're talking about Nirvana. Where does gratitude fit in this? Gratitude is your tool to humble the mind, because it is only when we are humble can we truly surrender to divine. So gratitude is that first step to humble the mind, to shape the mind, to build that foundation, and then do all the other practices until we reach Nirvana. And this is how now we can come to the future practices, which is day 13 and day 14. Day 13 is about making all your wishes come true. Imagination is the true carpet of magic. You're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Desires are not bad, but it's always good to be aware of what the state of mind is. And this is where meditation is very useful in allowing us to see the reality, seeing the flower for what it is, not our projections of ourselves in the flower. So on day 13, gratitude is something you must have before you can receive, not something simply you do after something good happens. You have to feel gratitude before something happens. Right now, for the entire last practices, we had been practicing gratitude for all the past.
But now the author is taking us into the future. So through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel it as if you have it, and you're fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it. It's not your job to figure it out how, but you must trust and know that when you're grateful for what you want will magically move to you because it's the law of the universe. So right now, I want you to take a moment and listen to this recording. It's in Hindi. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि I feel like the king of the world। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। और अगर ठीक ना तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। Okay, so we have seen this in movies. If you have seen Om Shanti Om, we have seen this in movie. Shah Rukh Khan, who has an innermost desire to find love, right? Whether if it's in this state of life, this birth, he doesn't get it. The next birth, he gets it. But this law is saying you will get it in this birth. You don't have to wait for the other birth. So as long as you have a truly pure desire for that thing, you will attract it towards you, according to the author. And day 13 is a fun day. Make a list of things you really want in all the sections of your life and write them down. And the author gives you the exact instruction, the template of how to write them down. So for example, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for my perfect partner. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I need for my European trip, Switzerland. So you have to write down all your top 10 desires in that template the author gives you. And if you want to do something even more powerful as a bonus activity, you can create a magical board. This is very powerful. If you've seen The Secret, the link that we posted earlier, the movie The Secret, you will have seen what a magical board is like. So this is a powerful magical board. On the top, you have to write thank you 3 times. And from magazines or pictures, anywhere you can print out from the computer, find images of things you truly want. And even you can stick words, what you imagine your future to be like. So happiness, full of life, divine yoga. And you want to explain? Yeah. तो हमने लास्ट टाइम बताया कि आपका करियर, मनी एंड रिलेशनशिप, वो सारे जो भी
हमने क्राइटेरिया बनाया था, उसमें से आपको जो लेकअप है वो हमें फुलफिल करना है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो जस्ट विजुअलाइज, आपको हो गया है, आप ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में ही है, ऐसे हम सोचेंगे। और मनी, मुझे जैसे हाउस लेना है, हाउस के लिए मुझे पैसा चाहिए, So money for the house. Yeah, my dream house. You want to relax in that house, eat good chocolate, and then you want to go to the Switzerland trip, enjoy there, parachute. Then you want to go to a summer holiday destination by the beach, sit down by the beach, candlelight dinners, living a nice natural life. It may be for the health area, you want a healthy heart, stick a picture of a good heart. You want to eat fresh from the earth, natural fruits and vegetables to stay happier. Maybe you want to work on your relationship. You see yourself having a baby, or enjoying your time with your baby, or having a nice time with your partner, growing old happy with your partner, and staying connected with the universe, spiritual level, becoming full of life. So you create your own destiny by creating your own magical chart in your way. And sometimes if you don't want to stick pictures and cut out pictures, you can also make it easy and fast. It doesn't have to be artistic. You can write thank you, thank you, thank you 3 times and actually draw whatever you see in your future. Maybe you want to see more of the nature, like plants and like waterfalls and like the night sky. You imagine what you want and put it down. And I found that the drawing part was actually more connecting because remember that we talked about the neuro-linguistic programming, the science of it, how when we involve all our senses, the sight, smell, taste, hearing, and our touch, we program our subconscious mind. So this is actually more healing, but you can always also have the option to cut out the pictures from the magazines and make a board like this. So once you make that board, which is on day 13, place it somewhere where you will see it every single day. So right in front of your bed, in your bedroom or your office table, wherever you will see every single day. So that imprint will always be in your mind. And that's pretty much it for day 13. Now, what's the difference between day 13 and day 14? Day 13 was about making your magical list, imagining what you really want in the long-term future. But then day 14 is about doing that same practice, but on a short-term level, on a day's level. So in the morning when you wake up, imagine all the activities. So plan out the events of the day and feel gratitude for them as if they have already happened in a positive, successful way. So many times we have to go to the supermarket and then we find that the line is too long, especially nowadays because of COVID, or we can't find parking or stuff like that, small things. Before going there, when you're at home, in your mind, feel gratitude. Thank you for finding the best parking spot. And send that gratitude's future spiral energy, or maybe you can think of it as dust, that one parking spot is always reserved for you right by the store. So you can do this for any kind of thing, activities you have planned for the day. So to see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it.
To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. So maybe you just want to have fun and maybe find more fresh fruits. So thank you for all the fresh fruits that I'm going to buy today. And see the magic happen. So gratitude is like a muscle. By practicing this short-term exercise, you will strengthen your long-term exercise. And that's the long-term goals that these are those long-term goals you want. So practice it in the short term every day, whenever you have a task to do. So thank you to this computer for the project that I'm going to work on, that I'm able to successfully finish it with 100% results. So just give that positive vibe out on it. And even though your mind will conflict, your analyzing, your thinking mind will conflict it. There's no way it's going to go well. And that's what the training is about. The story, when we talked about the flower story, don't let your own projections change the reality. Let the reality be as is. It will sort itself out. And just like in the Shah Rukh Khan's movie, if it's not gone well, then it's not the end. So stay with this thought and build your positivity muscle. Make your mornings positive and magical through gratitude to make your entire day, your entire life positive and magical. Thank you. जैसे बोले सुबह जैसे हम उठते ही जैसे कभी हमारा मूड खराब हो जाता है, ग्रम्पी मूड में उठते, बैड मूड में उठते, तो क्या पूरा दिन मेरा खराब हो गया, इसने मेरा मूड खराब कर दिया। और जैसे हम अपनी जैसे दुकान पे भी हम देखते हैं कि जैसे कोई शॉप पे कोई ऐसा कोई आदमी आ गया, सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो बोलते आज मेरी बोनी खराब हुई, कोई रिटर्न आया तो मेरी बोनी खराब हुई, राइट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम जैसे सुबह की हमारी जो लिस्ट है, जो मैं खुद अब ऐसे करती हूँ कि रात को ही अपनी मैं पूरा लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, और सुबह जैसे उठते हैं तो ये हमें पढ़ना है कि अच्छा मुझे आज ये क्लीन करना है, मुझे जॉब पे जाना है, और उसके बारे में अच्छा सोचेंगे कि अच्छा बहुत ही अच्छा हो गया, ये मेरा काम बहुत अच्छा गया, मुझे पार्लर जाना है तो मुझे फेशियल करवाना है, ओह बहुत अच्छा हो गया, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। तो पहले ही अच्छा उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर देंगे कि जो है लेडी उसने मेरा बहुत अच्छा फेशियल किया और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, मतलब एक्शन डन, और उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फीलिंग से बोल देना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे कोई भी पूरे दिन का हम इस तरह से हमें अपना गोल बना के उसको थैंक्स कर देना है। ओके, सो Eleanor Roosevelt said, with new day comes new strength and new thoughts. So begin your new day with new thoughts, blooming thoughts, and flower yourself.